Hello friends and welcome to Adda 247, the official channel of bankers and SSC Adda.com. You are watching the Hindu Editorial and Vocab show and I am Saurabh Dey. तो आज का जो आर्टिकल का नेम है वो तो आपने देख ही लिया होगा, वो हमारे इस हेडलाइन में मेंशन भी है। तो आज हम बात करेंगे इस स्पेशल आर्टिकल पे जिसमें हम बात करेंगे टेररिज्म की और उसके यूरोप कनेक्शन की, साथ ही में जो रीसेंट असैसिनेशन हुआ था रशिया में, एक्चुअली टर्की में हुआ था रशियन एनवॉय का। तो इन सब चीज़ों को हम लोग सम अप करेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ रीअरेंजमेंट्स और साथ ही में अपनी वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करें आज के इस द हिंदू एडिटोरियल एंड वोकैब शो में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट स्लाइड. Now see, here's the first one over here, a grim outlook for Europe. This is the heading. All right, this is the name of the article. It was published today itself. तो आज ही का आर्टिकल है, आज के द हिंदू में आपको मिल भी जाएगा, ये पेज 10 का आर्टिकल है. All right, now let's have a first look at the first few lines. The assassination of the Russian ambassador to Turkey by a gunman in Turkey is an evidence of enhanced version of terrorism. Turkey is no longer a merely troubled country. Its geography and dark history make it a perfect theater for conflict. आप लोगों को पता ही है कि हाल ही में जो रशिया के एम्बेसडर थे टर्की में, उनका जो है असैसिनेशन हो गया है, एक गनमैन द्वारा किया गया था ये असैसिनेशन, जो कि टर्की में एक पर्टिकुलर कह सकते हैं आप, वो एक ऑडिटोरियम टाइप का था, वहां पर वो स्पीच दे रहे थे और वहां पर उनको जो है गनमैन ने गोली मार दी आकर के. ओके, और देखा जाए तो ये जो पूरी घटना हुई, बिकॉज पब्लिक, देखा जाए पब्लिक के बीच में घुस के उस गनमैन ने गोली मारी थी. ऑलराइट, तो ये एक नया तरह का आतंकवाद देखने को सामने आ रहा है, जहां पर एक प्रोमिनेंट फिगर को जो है निशाना बनाया जा रहा है. साथ ही में ये जो घटना हुई, देखो भाई, ये टर्की में हुई और टर्की का जो हिस्ट्री रही है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्री रही है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुए हैं. वेदर हम क्रूसेड के टाइम की बात कर लें या अगर हम हाल की बात करें, कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ पर भी सत्ता पलट की कोशिश हुई थी. तो काफ़ी यहाँ पर विवादों में रहा है टर्की, ऐसा एक देश है. So I think most of you already know about the recent assassination of the Russian ambassador to Turkey in a particular auditorium. All right, he was giving a speech, and at that particular time, and as his assassination took place, a gunman, he shot him. And he died on the spot. All right. So this happened in Turkey, by the way. And Turkey is a country which is known for a lot of conflicts. Whether it's the conflict of the Crusades, which happened a long time ago, or whether it's the recent, the recent conflict over there regarding who's going to be the president. All right. So there was a recent, there was a coup over there in which the president was tried to be, toppled, but he wasn't toppled. All right. So such things have always put, Turkey in news for all the wrong reasons. Now let's have a look at the next few lines over here. The shooter was a cop with jihadi links. It was not just the attack on the Russian diplomat for avenging the losses caused to Syrian rebels by Russia, but an act of terror that must be seen as the terrorist scenario worsens in West Asia. अब देखिए, उस बंदे ने जिसने गोली चलाई थी, वहाँ के जो एम्बेसडर थे, रशियन एम्बेसडर थे टर्की में, तो उन पे जिसने गोली चलाई थी उसके जिहादी संबंध थे, ऐसा माना जा रहा है. और साथ ही में देखो, अगर आप लोगों को ये चीज़ पता होगा तो अच्छी बात है, आईसिस के खिलाफ, ऑलराइट, आईसिस के खिलाफ बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं. लेकिन रशिया एक ऐसा देश है जो कि सीरिया का बहुत बेस्ट फ्रेंड टाइप का है. ऑलराइट, और रशिया क्या कर रहा है, रशिया आईसिस के खिलाफ भी लड़ रहा है और साथ ही में जो सीरियन रेबल्स हैं, ऑलराइट, इनके खिलाफ भी लड़ रहा है. ठीक है, और यहां पर जो कंफ्लिक्टिंग पॉइंट आता है वो ये आता है कि यूएसए जो है, यूएसए सीरियन रेबल को सपोर्ट करता है और साथ ही में आईसिस को भी मारता है. ठीक है भाई, तो रशिया यानी कि देखा जाए तो, क्योंकि जो सीरिया है वो ये चाहती है कि ना रेबल्स रहे ना आईसिस रहे. ऑलराइट, तो रशिया उसी अप्रोच को अपनाता है, जिसकी वजह से कई बार रशिया और यूएस में काफी ऑपोजिशन भी आ जाता है. उसने जो है, जिस बंदे ने गोली चलाई थी, उसने एलेपो के संदर्भ में कहा था, डोंट फॉरगेट एलेपो. ऑलराइट, कुछ ऐसी चीज उसने कही थी. तो यहां पर ताकि ये लोग ये समझे कि जो रशिया ने हमला किया हुआ था एलेपो में, जो सीरियन रेबल्स के खिलाफ हमला किया है, जो सीरियन रेबल्स को जो नुकसान हुआ है, उसका बदला लेने के लिए इस हमले को किया गया है. लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो वेस्टर्न जो हमारा जो वेस्ट एशिया है राधा, तो वहां पर जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा बेसिकली कह सकते हैं आप, उनको वहां पर बढ़ावा मिल रहा है और जो अलग अलग संगठन है वो भी और सशक्त होते जा रहे हैं.
So the shooter who shot this particular ambassador, Russian ambassador to Turkey, was actually a cop with jihadi links, all right? And I suppose most of you would have known about this thing that, Syria is actually dealing with ISIS right now, all right? And the problem is that Syria doesn't want the rebels, the Syrian rebels to take over, because the Syrian rebel wants to topple the Assad government over here, all right? And the Assad government is actually assisted by Russia. So the Syria guys, all right, they want to get rid of ISIS, and they also want to get rid of all these Syrian rebels, all right? And in this particular field, Russia is helping them right away. Now, many of you would have known about the Russia versus USA concept. Over there, see, the USA, the Americans, they are trying to help the rebels, but they're also trying to get rid of the ISIS, all right? So this funda is over there, but because the Russians are against the Syrian rebels and the Americans are for the Syrian rebels, so lots of problem over there is going on. Now, the thing is that Russia, in its attack over rebels, had actually caused, a lot of harm to all the rebels over there. And with this particular attack, when it took place, that guy who assassinated the Russian diplomat, the Russian ambassador to Turkey over there, he shouted some chants like, don't forget Aleppo or something like that, okay? So that's the place. Actually, that's the place where the Russian bombings took place, and a lot of trouble happened for these Syrian rebels over there, all right? So ultimately, so that he tried, that particular guy who did the assassination, he tried to paint it over there in a way that, this is we are avenging the killings of the Syrian rebels that has been taken place because of the Russian troops. But the thing is, this incident actually, it shows that the Western Asian nations are actually not a safe place for at all, because they are actually, breeding grounds for all the various terrorist organizations, and their activities need to be checked immediately. Now, let's have a look at the next slide. See, here's the next slide over here, and this shows the rearrangement that you have to arrange, my dear friends. तो आप सभी को यहाँ पर देखिए एक rearrangement दिख रहा होगा, और इस rearrangement को आपको जल्दी से arrange करना है, alright? तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, उसमें आप इसको arrange कर पाए. And your time starts now. Hurry up. "45 seconds left for your rearrangement. Hurry up. Give me the correct combination." Last 30 seconds left. Hurry up. Arrange it quickly. What is the correct combination? Just 15 seconds more. Last 5. Okay, I'm getting some answers. And the time is up. All right, let's just have a look. See, till now, only one guy was able to arrange it a bit, and that was Jaspreet Aneja. Well done, well tried, Jaspreet. All right, he said that's F. The combination should be something like, FDEBAC. All right, well, we gotta have a look at it for sure. And then we got another combination by Kajal. She says FDABC. All right. Now, the thing is, let's have a look. Now, I'll have to look at and I'll have to arrange this for you, my dear aspirants. All right. Statement A says, conflict. The perpetrator who was later shot dead by security forces was a policeman said to have. देखो, जो conflict है, देखो, इसका मतलब वही है जो basically conflict है, जो problem है. और जो perpetrator है, देखो, see, perpetrator means ultimately the person, the culprit, all right. वो बंदा जिसने कोई गलती करी हो, all right. और यहाँ तो उसने भाई गोली चलाई थी, तो obvious है कि वो दोषी करार था यहाँ पे. Now, उसके बाद दिया हुआ है, सेक्शन बी में दिखा हुआ है, इन्वॉल्वमेंट इन द सीरियन ऑफेंसिव अगेंस्ट इट्स रेबल्स. किसका इन्वॉल्वमेंट? ऑलराइट, ये हमें देखना पड़ेगा. इट इज फार मोर देन दैट. ऑलराइट, सी में दिया हुआ है जिहादिस्ट लिंक्स. हु, किसके जिहादिस्ट लिंक? ये देखना पड़ेगा, यानी कि ये पिछले कहीं से शुरू हुआ था. इट इज नाइव टू डिसमिस. नाइव मतलब कह सकते हो आप, ये बहुत बचकानी किस्म की हरकत होगी. टू डिसमिस द एम्बेसडर्स किलिंग एज अ मेयर एक्ट इन रिप्राइजल. रिप्राइजल कह सकते हैं आप, बदले के समझ में बोल सकते हैं. फॉर रादर यू कैन से reaction, reaction or something like that for Russia's direct what? ये हम लोग को देखना पड़ेगा. डी में दिया हुआ है Turkey last week. What happened in Turkey last week? Because शुरुआत में तो यहाँ उतना कुछ clear नहीं है. Is a clear evidence of the enlarging contours of terrorism. All right.
Turkey is no longer a merely, what is it no longer a merely? स्टेटमेंट ई में लिखा हुआ है troubled country. लग तो ये रहा है कि देखो जो लास्ट लाइन था, Turkey is no longer a merely troubled country, शायद ये यहाँ पर कनेक्शन बन रहा है. It is geography and checkered history. Its geography and checkered history make it potentially very grave theater of. All right. So looks तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो D और E तो कॉम्बिनेशन में है. Okay. Now statement F says the assassination of the Russian ambassador to Turkey by a lone gunman at an exhibition in Ankara in Turkey last week. All right. So हम कह सकते हैं statement F is the first statement, then it will be followed by D and then it will be E. तो भाई जो starting होगा वो तो FDE होने वाला है. अच्छा, अब FD में देखो E में लिखा हुआ है, last line क्या है? Troubled country, geography and checkered history make it potentially very grave theater of what? Of conflict. Statement A में लिया हुआ है साफ साफ, theater of conflict. The perpetrator who was later shot dead by security forces was a policeman said to have what? Said to have jihadist links. Sentence okay, C यहाँ पर connect हो रहा है. तो A के बाद देखो C आ रहा है, so C comes after A, jihadist link. It is naive to dismiss ambassador's killing as a mere act in reprisal for Russia's direct involvement, that's statement B, in Syrian offensive against its rebels. It is far more than that. So perhaps, I suppose, all of you would have been able to grab the correct rearrangement combination over here, and I'll be typing the same for you guys very soon, all right? And here I have, I've logged in, my dear aspirants. And so, the correct combination, I'm typing it right here. Many of you have been able to detect it as well. Well done, by the way. And those of you who weren't able to get it till now, well, here's the correct answer, and that's going to be, okay, so that'll be F, the assassination of the Russian ambassador to Turkey by a lone gunman exhibition Ankara in Turkey last week, all right, is clear evidence of the enlarging contours of terrorism. Turkey is no longer merely a troubled country. Its geography and checkered history make it potentially very grave theater of conflict. The perpetrator, who was later shot dead by security forces, was a policeman said to have jihadist links. And it is naive to dismiss the ambassador's killing as a mere act of reprisal for Russia's direct involvement in the Syrian offensive against its rebels. So, all right. तो आप लोग कहते हो कि देखो सर rearrangement कितना tough है, but I am actually surprised to see that how easily you guys are solving it. So well done, by the way. All right. So well done, my dear aspirants. No issues. देखो, अगर आप लोग ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहोगे, अगर हम लोग ऐसे ही we'll keep on practicing like this daily, I'm pretty sure that you guys will be really masters of rearrangements. All right. Now let's have a look at the next slide. See, here's the next slide for you, my dear aspirants. Eyes on Russia. This is the next subheading. अगली जो subheading है वो है Eyes on Russia. इसमें primarily हम लोग रशिया का जो reaction होने वाला है उस पर ध्यान देंगे. साथ ही में कुछ और भी जो connected points हैं उनको भी देखेंगे. So we'll have a look at the Russian reaction to this assassination, and we'll also have a look at all the other connected reactions over here. So the first part is the Turkish president is confused whether to choose the extremist groups backing the jihadist cause to increase his support base in the country, or stay secular to retain the minimal ties he has with the West. Now the thing is, see, अभी हाल ही में टर्की में जो है कूप हुआ था वहां पे, ऑलराइट, वहां पर सत्ता पलट की कोशिश हुई थी, और वो इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पर जो आम थिंकिंग जो है ये बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो अभी के वहां टर्किश प्रेसिडेंट है ये जो है ये सेक्युलर नहीं है, ऑलराइट, तो ये जो है बेसिकली ये जिहाद की तरफ झुके हुए हैं और इसीलिए इनको वहां प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहिए, ये बोल करके वहां जो डिफेंस फोर्सेज हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ने वहां पर सत्ता पलट करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो नाकाम हो गया था, नाकामयाब हो गई थी एक्चुअली, ऑलराइट। सो बेसिकली जो टर्किश प्रेसिडेंट है वो ये देख रहे हैं कि देखो, और इनफैक्ट बहुत सारे वहां पर अलग अलग आतंकवादी हमले भी हुए जा रहे हैं, ऑलराइट, और इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि शायद टर्की में अलग अलग जो ये जिहादी ग्रुप्स हैं, ऑलराइट, ये काफी एक्टिव हो रखे हैं। तो टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं इन्हीं जिहादी ग्रुप के साथ जुड़ जाऊं ताकि जो उनका सपोर्ट बेस है वो बढ़ सके, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस बार वो प्रेसिडेंट रह पाए थे, ऑलमोस्ट टॉपल हो चुके थे, ऑलराइट, और या फिर वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं जो वेस्टर्न कंट्रीज है लाइक यूके, यूएसए, ऑलराइट, तो इनके साथ जुड़े रहने के लिए क्या मैं सेक्युलर बना रहूं, ऑलराइट। So the Turkish president actually he's confused whether to choose an extremist groups backing the jihadist cause, because the thing is, see, a few days ago there was a coup attempt in Turkey, all right,
And why it happened? Because a section, all right, a faction of the defense forces over there, they were trying to spread this particular thing that, the Turkish president, he is not secular at all, and he's actually pro for a jihadist groups, and that's why he should be removed, all right. So that's the thing. However, that coup failed, and he's still the Turkish president, by the way, and he's still confused, by the way, because he knows a lot of attacks are taking place, a lot of jihadi group attacks are taking place in Turkey, and he's actually confused whether he should support such extremist groups, all right, that back jihadist cause, or should he keep on or should he stay, stay secular, so that his minimal support base, his minimal ties with the West can continue. All right, so this is what the point is. Now let's have a look at the next point over here. The Russian president, now here comes the reaction of Russia. The Russian president is well known for his no-nonsense attitude and will not let this one go easily. He has shown no signs of going back on his support of the Syrian president and has imposed a team of investigators which might unsettle the Turkish police. All right. भाई हम सभी लोग जानते ही हैं ऑनरेबल रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन को, ऑलराइट, और वो बेसिकली बातें कम काम ज़्यादा करने में यकीन रखते हैं, ऑलराइट, और ये उनका नो नॉनसेंस एटीट्यूड भी है साथ ही में, और डेफिनेटली वो ऐसी चीज़ को कि उनके एक एम्बेसडर को किसी आतंकवादी ने गोली मार दी या किसी ने गोली मार दी या असैसिनेट कर दिया, इस चीज़ को वो हल्के में तो नहीं छोड़ देंगे, ऑलराइट। तो वो बहुत तगड़ा रिएक्शन इस पर देने वाले हैं, ऑलराइट, और साथ ही में सीरिया के जो प्रेसिडेंट है, ऑलराइट, तो उनको जो सपोर्ट ये करते हैं ये लगातार करते जाएंगे। इन्होंने साफ साफ यही कहा है, और इन्होंने ये भी कहा है कि ये सीरियन रेबल्स का खात्मा भी करेंगे और आईसिस का खात्मा भी करेंगे। इनके एक्शंस में भी ये दिखता रहता है साथ ही साथ, ऑलराइट। तो थिंग अब देखो, इस पर्टिकुलर चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने रशियन टीम एक बनाई है इन्वेस्टिगेटर्स की, और जो कि अल्टीमेटली डिस्टर्ब काफी करने वाली है टर्किश पुलिस को, ऑलराइट। नाउ द थिंग इज, so the Russian president over here is well known for his no-nonsense attitude, alright. All of us know honorable Russian president, that's Vladimir Putin, by the way, and he's got a lot of no-nonsense attitude, all right, and he will not spare the perpetrator or the people who were involved in the assassination of the Russian envoy to Turkey, all right. So that's the thing, and he has shown no signs of backing at all on a support to the Russian president over here, to the Syrian president over there. Now the thing is, and he has also imposed, all right, he has also imposed a team of investigators on Turkey, which might actually disturb the Turkish police. Now let's have a look at the next slide, please. See, here's the next slide for you, by the way. In another attack, a lone trucker overran a crowd of shoppers at a market in central Berlin, killing 12 people and injuring many. Simultaneously, a lone shooter attacked a Muslim prayer hall in Zurich. Seems like solo attacks have become a regular feature of terrorism. All right. तो बेहद दुखद घटनाएं यहाँ पर हमारे सामने हैं। देखो, पहली जो ऐसी घटना थी वहाँ पर हुआ ये कि एक बंदा जो है ट्रक चलाते हुए बेसिकली एक क्रिसमस शॉपर्स की क्राउड थी, भीड़ थी, वहां पर लगातार वो घुसता चला गया, ऑलराइट, और उसने बहुत सारे लोगों को कुचल डाला, ऑलराइट। सेंट्रल बर्लिन में ये घटना हुई थी। उस ट्रक के कुचलने से तकरीबन 12 लोगों की जो है तुरंत मौतें हो चुकी हैं, और बाकी लोग गंभीर रूप से, बहुत सारे लोग घायल भी हैं, ऑलराइट। और उसी वक्त देखा जाए तो मुस्लिम प्रेयर हॉल में ज्यूरिक में, जो कि बेसिकली एक स्विस की, वहां पर स्विस के आसपास ही जगह है, स्विस में ये जगह है रादर, ऑलराइट। तो ज्यूरिक में जो है एक मुस्लिम प्रेयर हॉल पे एक शूटर ने, गनमैन ने हमला कर दिया, ऑलराइट। अब आपको एक चीज यहां जानना जरूरी है कि देखो, जो आईसिस है, ऑलराइट, आईसिस जो है वो शियास को, वो मानता ये है कि शियास शुड बी क्लियर्ड ऑफ, तो इसीलिए वो जो है काफी सारे जो शियास जो कम्युनिटी है इसके खिलाफ जबरदस्ती के वो जो है अलग अलग किस्म के कह सकते हैं आप क्रूर हरकतें करता रहता है। तो मेरे ख्याल से इसी तरह का जो है वहां पर एक प्रेयर हॉल था ज्यूरिक में, जिस पर कि यहां पर एक हमला कर दिया गया। तो देखा, ये जो देख रहे, इन दोनों जो घटनाएं हुई हैं, जो दुर्घटनाएं हुई हैं, इसमें जो ट्रेंड देखने में आ रहा है वो ये देखने में आ रहा है कि शायद देखो, अब तक जो बेसिकली जो आतंकवाद था वो ऐसा था कि जो ग्रुप में आतंकवादी या गुट में जो है घूमते थे, हमला करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी जो है सोलो अटैक्स कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल आतंकवादी जो है हमला करने की कोशिश कर रहा है, और शायद जो आतंकवाद है वो इस तरह से फैलाने की वो लोग प्रयास कर रहे हैं। Alright, so in another attack, alright, a lone trucker overran a crowd of shoppers. Actually, they were all Christmas shopping was going on over there. So actually that lone trucker overran a crowd of Christmas shoppers at a market in central Berlin,
killing 12 people right away and injuring a lot, critically injuring a lot of people. Simultaneously, a lone shooter attacked a Muslim prayer hall in Zurich. Now, it's very important for you guys to understand that, ISIS is against Shia Muslims as well, all right? So, it has turned, it has actually, it has done every genocide possible against Shia Muslims, all right? And in the same way, this particular attack took place in Zurich, that's in Switzerland, by the way. So, where a lone shooter attacked a Muslim prayer hall in Zurich, and seems like what we can make up from this, what we can make out of these such sentences, such acts of terror rather, that is solo attacks, people involving a single person, has become a regular feature of terrorism. Now let's have a look over here at the things given below. Such attacks are swift, efficient, and require less resources from a terrorist point of view. Europe these days is facing the heat of the terrorist groups such as Al-Qaeda, ISIS, etc. And the policies of many countries in Europe don't help either. Alright, so the thing is that, such attacks, why solo attacks are being preferred? Because अगर हम अगर हम एक आतंकवादी के नजरिए से देखें तो बेसिकली जो सोलो अटैक होता है जिसमें कि सिर्फ एक बंदा ही हमला करता है, ये काफ़ी तेज तर्रार किस्म के हमले होते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज उनके वेस्ट नहीं होते और बहुत ही कम रिसोर्स लगते हैं और बहुत ज़्यादा आतंक वहाँ फैल जाता है। साथ ही में देखा जाए तो यूरोप में आजकल कुछ ज़्यादा ही ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसमें कि अलकायदा इन्वॉल्व होता है और आईसिस इन्वॉल्व होता है। ज़्यादातर देखा जाए तो आईसिस का जो हिस्सा है, जो पकड़ है, वो सीरिया से और इराक से छूट चुकी है और इसीलिए आईसिस कोशिश ये करता है कि जैसे ही कोई कहीं आतंकवादी हमला हुआ तुरंत कह लेता है कि भाई ये हमला हमारा है, ताकि लोग ये समझे कि आईसिस का वजूद जो है वो अभी बना हुआ है। साथ ही में कुछ पॉलिसीज जो हैं कुछ यूरोपियन नेशंस की, जैसे कि कुछ यूरोपियन नेशंस में उन लोगों ने हिजाब बैन कर दिया है, तो कहीं कहीं उन लोगों ने बुर्का बैन कर दिया। तो ये जो पॉलिसीज हैं बेसिकली देखा जाए ये मॉडरेट मुस्लिम्स को परेशान करती हैं और जिसका फायदा उठाते हैं ऐसे रेडिकलिस्ट जो कि बेसिकली जिहादी जो है इन चीजों को जो है फैन करना चाहते हैं। ऑलराइट, so such attacks are swift. Why people are preferring, solo attacks? Because such attacks are swift and efficient, all right? They require very less resources. Just a single person, going out on a killing spree, right away, all right? So actually, it's a very efficient attack from a terrorist point of view. Europe actually, Europe these days is facing the heat of terrorist groups, all right, such as the Al-Qaeda or ISIS a lot, Actually, the primary thing is that ISIS actually has lost a lot of grounds over there in Iraq and Syria. So whenever any attacks takes place around the globe, ISIS is the first one to claim responsibility and says that we have conducted the attack, whether they have conducted it or not, just to prove that we still exist, we have not lost ground. Now the thing is that the policies of many European countries don't help the cause either, because many countries in Europe have banned hijab and they've also banned burqa and various other things, which is actually something that's disturbing the moderate Muslims over there. And such points, actually, such things are used by these radical Islamists over there who promote jihadi terrorism. Now, let's have a look at the next slide. See, here's the next slide for you, by the way. Political fallout. Now, this is the next heading over here. Now, let's have a look what's given in political fallout. All right, two leaders are facing a lot of heat. The first one being the Russian president, because everyone knows about his dubiousness in handling the case of Chechnya, from where a lot of people have joined the rank of ISIS. All right, अब देखा जाए तो देखो भाई, दो leaders basically ऐसे हैं जो उनको बहुत सारा criticism झेलना पड़ रहा है, जब जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करनी पड़ी, गर्मी क्या रादर इनको बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, बिकॉज और इसमें ऐसे जो है पहले लीडर जो है वो रशियन प्रेसिडेंट ही है। क्यों? क्योंकि हर कोई जानते, देखो रशियन प्रेसिडेंट जो अभी हमारे हैं वो पहले जो है केजीबी की एक एजेंट हुआ करते थे और अल्टीमेटली देखो रशिया में जो है मेरे ख्याल से अभी मैंने जब ये रिपोर्ट तैयार करा था तो मैंने थोड़ा मैप में देखा था तो थोड़ा सा मैंने इसकी हिस्ट्री खंगाली थी। तो ये जो रीजन है वहाँ पर चेचनिया, ऑलराइट, ये जो रीजन है वहाँ पे ये एक्चुअली दिस इज नोन अ प्लेस, ऑलराइट, जहाँ पर जो रेडिकल इस्लामिस्ट थे, ऑलराइट, ये स्टार्टिंग से रहे हैं जो जिहादी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और वो हमेशा जो है खिलाफ रहे हैं रशियंस के या किसी भी और वहाँ पर ग्रुप के जो भी उनके साथ रहने की कोशिश कर रहा है, ऑलराइट। और देखा जाए तो लगातार इन लोगों ने आतंकवादी हमले किए हैं और इन लोगों ने जो है बहुत सारे रशिया में भी बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, इन्होंने इनफैक्ट स्कूल में भी सीज कर ली थी, तो बहुत सारी जो है इन्होंने दुर्घटनाएं करी हैं। तो रशिया जो है पूरी कोशिश कर रहा है इनको सफाया करने की, लेकिन अपने आप पता नहीं कहां से फिर से दोबारा पनप
चले आते हैं। और रात में देखा जाए तो बहुत सारे लोग, अब रशिया का ये क्लेम है कि हमने पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले रखा है, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर एरिया जिसको हम नाम ले रहे हैं यहाँ पर चेचनिया, ऑलराइट, या यहाँ से बहुत सारे लोग जो है आईसिस ज्वाइन करे हैं ताकि उनको जो है, बिकॉज वो देन यू नो देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली जिहादिस्ट, ऑलराइट, एंड दे वांट टू fight against Russia right away. So two leaders actually are facing a lot of hate in the world right now. The first leader being the Russian president, because everyone knows about his dubiousness, what happened in Chechnya, all right. He says, or in fact all of this government says that the entire situation is under control, but the problem is that again and again these rebels of Chechnya, all right, they have always tried, and you know they have been successful in bombings and various kind of terrorist activities in Russia and other parts as well. And you know a lot of people from this particular place, all right, they went and joined the ISIS as well. Now let's have a look at the next second point over here. The second one, now who's the second leader? The second one being German Chancellor Angela Merkel, who actually, you know, Angela Merkel, who is all set to face an election and is eyeing a fourth term. Her support to 1 million refugees hasn't gone down well with the rightists, but she doesn't want problems with the Islamic terrorists and is trying her best not to provoke them. All right, so that's the thing. Now the second one, all right, the second leader over here being the German Chancellor Angela Merkel, all right, who is all set to face an election once again and is eyeing a fourth term, all right. So the thing is that her support to 1 million refugees who came in from Syria and you know places a lot like that, all right. So Syria and Iraq, a lot of people came there, or in fact, and she gave she gave, you can say, she said that this is the people of Germany are, very helpful and open to all of us. So she provided sanctuary to a lot of people, to 1 million refugees over there. But this decision of providing sanctuary to 1 million refugees has not gone down well with the rightist of the nation. See, rightists are those people who are actually orthodox in thinking, and they're there in almost every country. All right. So the rightists of Germany are not really, supporting her decision of offering a sanctuary to 1 million refugees from Syria and places like that. But she doesn't want to have problems with Islamic terrorists as well, because the thing is that if she just fears of the fact, because see, if she just takes any step, all right, or she starts investigating all the refugees or something like that, perhaps it might provoke the Islamic terrorists, and a lot more terrorist attacks might take place, like the one that took place in the central Berlin. So the thing is, अब देखो जो दूसरा जो लीडर है जो कि बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो है जर्मन कांसलर, एक्चुअली फेस कर रही हैं ये है जर्मन कांसलर जो है वहाँ पर एंजेला मर्केल है। अब देखो एंजेला मर्केल को जो है दोबारा फिर से इनफैक्ट चौथी बार उनके सामने इलेक्शन होने जा रहा है यहाँ पर जर्मन चांसलर के लिए, और वो चाह रही कि वो चौथी बार भी जीत जाएं। अच्छा, अब उनके सामने दो प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम ये है कि देखो भाई, उन्होंने 10 लाख रिफ्यूजीज से ज्यादा को जो है आश्रय दिया हुआ है, अपने यहाँ शरण दी हुई है जर्मनी में, जो कि वहां पर जो कट्टरपंथी है, जर्मनी के जो कट्टरपंथी है, उनके साथ ये बहुत ज्यादा बेसिकली उनको ये चीज गलत लग रही है, और उनको लग रहा है कि ये जो चीजें हुई हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो जर्मन चांसलर है एंजेला मर्केल जो है, वो जो भी इस्लामिक टेररिस्ट हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स नहीं चाहती हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा उनके देश में हमला हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो, ये जो आतंकवादी संगठन हो रखे हैं अलग अलग, ये जो है भड़क जाए और फिर से जो है हिंसा शुरू करते हैं और भी आतंकवादी हमला शुरू करते हैं जर्मनी के अंदर। तो इसीलिए वो बिकॉज वो बहुत स्टेप जो है बहुत ध्यान कर वो जो स्टेप्स ले रही हैं। सो दीज वर द गिवन टिल द व्हाट वी सॉ राइट नाउ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके सामने समअप किए। आप चलते हैं हम लोग आगे, एंड द नेक्स्ट वन इज, here's the question. The next slide contains the question for you, my dear aspirants. So, which of the following is true according to the passage? तो जो आपने अभी इतने सारे स्लाइड्स देखे, उन स्लाइड में से ये जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर बताओ भाई। So, which of the following is true according to the passage? Statement A is the Turkish president will support the jihadi elements to increase vote bank. All right. तो जो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो सपोर्ट करेंगे जिहादी एलिमेंट्स को अपना वोट बैंक इंक्रीज करने के लिए। सेकंड पॉइंट ये है द टर्किश प्रेसिडेंट, ओके, द सेकंड पॉइंट इज द Russian president has imposed an investigation team which can disturb Turkish police, and C is the German chancellor has decided to deport all the immigrants. So you got approximately, you can say 30 seconds to give me the answer of your question, and your time starts now. Hurry up. "15 seconds left to answer. Hurry up." Okay, the first says only B by Pavitra. We'll have to see about that.
And the time is up, but you guys can keep on answering if you want to keep on answering. Well, the thing is, now the thing is, see, statement A says the Turkish president will support the jihadi elements to increase vote bank. No, it was not said so. So statement A cannot be true. Statement B says the Russian president has imposed an investigation team which can disturb Turkish police. Yes, it can be there. Now, statement C says the German chancellor has decided to deport all the immigrants. No, she hasn't decided anything so far. So, it's going to be only B. That's option number 4. तो जिन्होंने भी कहा है कि विकल्प नंबर 2 only B, केवल B, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने. So, well done, my dear aspirants. Now, it's time to move on. और लग तो ऐसा रहा है मुझे कि हमारे जो कंप्यूटर जी हैं, इनका जो है शायद चार्ज कहीं खत्म ना हो जाए. चलिए कोई बात नहीं. Now, let's have a look at the next slide. Well, see, here's the next slide for you, my dear aspirants. Psychology of terror. All right. So, psychology of terror, ये जो है हमारी अगली सब हेडिंग है. यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो आतंकवादी हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये समझा जा सकता है कि नहीं समझा सकता है. अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं. देखो, अमरी अंसारी, the trucker who overran Christmas shoppers in Berlin, was shot dead by police. He was just 24. Hailed from a very poor part of Tunisia. He was a school dropout and to get a decent living, he sneaked into Europe. His family back home had no idea about his actions. All right. तो अमरी अंसारी, देखो ये नाम था उस बंदे का जिसने कि जो है क्रिसमस शॉपर्स के ऊपर ट्रक चढ़ा दी थी. तो ये वो बंदा था जिसने कि वो ट्रक चढ़ाई थी बर्लिन में, और इसको जो है पुलिस ने कुछ दिनों पहले एनकाउंटर में मार भी दिया है. ऑलराइट. और इस बंदे की जो उम्र थी वो सिर्फ 24 साल की थी. ये जो है टूनिशिया के एक बहुत ही गरीब हिस्से से बिलोंग करते थे भाई साहब. अच्छा, और ये जो है ये एक स्कूल ड्रॉप आउट भी थे. इन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं करी थी. ओके. और क्योंकि इनके जो लिविंग था, यानी कि कह सकते हैं आप, इनके पास जो है कुछ रोजगार ना होने के कारण इन्होंने जो है यूरोप में इलीगल तरीके से ये घुसे थे. ओके. अच्छा, अब देखा जाए तो इनके जो घर परिवार में जो लोग थे, यानी जो टूनिशिया में जो लोग थे, उनको कोई भी आइडिया नहीं था इनके इन हरकतों के बारे में, या ये क्या बेसिकली इनके माइंड में क्या थॉट्स थे जिहाद को लेकर, इसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था. सो द गाय who actually was the trucker, who overran people, all right, who trampled people in Berlin, who trampled the Christmas shoppers in Berlin, was actually Amri Ansari, who was shot dead recently by the police, all right. He was just 24. He hailed from a very poor part of Tunisia. He was a school dropout, all right, didn't complete his education and wanted to get a decent living, and that's why he sneaked into Europe, all right. So his family back home, and that means his family in Tunisia, had no idea about his jihadist actions. All right. Now, coming to the second part over here, they could hardly believe the fanatic they could hardly believe the fanatic that he had become. So, the police wasn't able to find anything in his lifestyle that proved his bent towards jihadists except physical evidence, although they believe he was in touch with Abu Wala, a known Iraqi preacher in Germany. ओके. अब बेसिकली जो उसके परिवार के लोग थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो ऐसा कैसे, ऑलराइट, ये जो आमरी अंसारी था ये कैसे आतंकवादी बन चुका था, ये कैसे बिल्कुल जो है फैनेटिक बन गया था. ओके. और साथ ही में जो पुलिस थी उसने उसकी लाइफस्टाइल को जब खंगाला तो उसको ऐसा कोई बेसिकली चीज नहीं मिली जो कि उसका जिहाद की तरफ झुकाव दिखाता था. लेकिन हाँ, उनको कुछ फिजिकल एविडेंस जरूर मिले जिसके तौर पे वो उन तक पहुंचे और एनकाउंटर कर दिया उसका. ऑलराइट. और लेकिन साथ ही में देखा जाए तो हाँ, तो पुलिस को एक लिंक जरूर मिला था कि वो शायद अबू वाला जो है ये एक इराकी प्रीचर है जर्मनी में, इनके साथ ये शायद कांटेक्ट में था. ऑलराइट. सो दे कुड हार्डली बिलीव दैट द फैमिली, ऑलराइट, द फैमिली ऑफ दिस आमरी अंसारी कुड हार्डली बिलीव द fanatic that he had become, all right, and the police wasn't able to find anything in his lifestyle or that proved his bent towards jihadist in a psychological manner except the physical evidence that led to the to the killing of Amri Ansari, to the encounter of Amri Ansari by the police over there. Now, although they do believe that he might have been in touch with Abu Wala, that's a known, that in fact Abu Wala is actually a known Iraqi preacher in Germany. Now, let's have a look at the next one over here. See, the next one over here this is the last slide by the way, the response. Now, the security forces believe that the attention of the terrorist groups has turned towards the solo attacks involving vehicles. It's very simple to rent a vehicle using artificial ID and ram through a public place causing mayhem. Basic checks of barricading could have saved a lot of lives in Europe.
ऑल राइट, अब देखा जाए तो दो सिक्योरिटी फोर्सेस है भाई, अब उनको ये लग रहा है, और इनफैक्ट ये टेररिस्ट जो हमले हो रहे हैं, जो बार बार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसका साफ साफ उनको समझ में आ रहा है कि ये जो आतंकवादी जो संगठन है, अब जो है ये सोलो अटैक्स, ऑल राइट, यानी कि एक सिंगल पर्सन को इन्वॉल्व करने में, अटैक में जो है वो ऐसा यकीन रखते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो है ये जो हमलावर है, इन्होंने ट्रक्स का यूज किया है या फिर उन्होंने दूसरे व्हीकल्स का यूज किया है, और अब लोगों को ये लग रहा है, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को ये लग रहा है कि बेसिकली व्हीकल्स का इस्तेमाल सबसे आसान है, क्योंकि कोई भी फेक आईडी दिखा करके कोई भी व्हीकल जो है रेंट पे ले सकता है और उसके बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान कर सकता है। इनफैक्ट अगर कुछ बेसिक चेक्स लिए जाते, कुछ बैरिकेडिंग की जाती वहां पर बर्लिन में, तो डेफिनेटली जो दुर्घटना हो गई क्रिसमस शॉपर्स के साथ वो नहीं होती। ऑलराइट, सो नाउ द सिक्योरिटी फोर्सेस बिलीव दैट द अटेंशन ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स हैज टर्न्ड टुवर्ड्स द सोलो अटैक्स इन्वॉल्विंग व्हीकल्स, ऑलराइट, इन्वॉल्विंग अ सिंगल पर्सन and also the vehicle that will be driven by that person, and it's very simple actually to rent a vehicle using an artificial ID and ram through a public place, alright, ram through the public over there, ram through a crowd, causing mayhem, trampling everyone, alright, and causing a lot of mayhem. So basic checks of barricading, by the way, could have saved a lot of lives in Europe, and especially that Berlin region. Now the last point over here, the law enforcement agencies of Europe may have to do whatever it takes to stop the terrorists in Europe given the increasing frequency of the attack. All right, तो देखा जाए तो बहुत जल्दी जल्दी यूरोप में हमले हुए जा रहे हैं अलग अलग देशों में, और उनका जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्हें बहुत जल्दी कुछ स्टेप्स लेने होंगे इन हमलों को चेक करने के लिए, वरना जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। So the law enforcement agencies of Europe may have to do whatever it takes to stop the terrorists in Europe, and given the increasing frequency of the attacks. All right. So whatever tough steps you guys are gonna get over here. All right. ये जो basically जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, स्लाइड्स में जो भी आपको टफ वर्ड्स होते हैं वो आप लोग आपस में डिस्कस करते रहा करिए, बिकॉज आपसे डिस्कशन से आपका जो नॉलेज होगा वो बहुत आसानी तरीके से बढ़ने वाला है। All right. Now let's have a look at the vocab. Okay, now first of all we'll have to look at the question. All right, then we'll have a vocab session. So let's have a look at the question. Okay, so here's the question for you: which of the following is not true according to the passage? All right, तो इन तीन स्टेटमेंट में से सत्य नहीं है कौन सा स्टेटमेंट पैसेज के हिसाब से? स्टेटमेंट ए में दिया हुआ है अमरी अंसारी वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी सिंस चाइल्डहुड। ऑलराइट, तो जो अमरी अंसारी जो ट्रकर था वहां पर जिसने बर्लिन में लोगों के ऊपर ट्रक चला दी, क्या वो इंसानियत के खिलाफ था बचपन से? और अगले दो पॉइंट्स है वो ये है। स्टेटमेंट बी सेज द सिक्योरिटी एजेंसीज बिलीव दैट देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड एज फार एज टेररिस्ट अटैक्स आर कंसर्न्ड। स्टेटमेंट सी सेज द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मस्ट टेक suitable actions quickly to stop terrorists in Europe. And you got approximately 30 seconds to give me your answer, and your time starts now. Okay, last 15 seconds to give me your answer quickly. Ratnil has given the first answer. Let's see how many others are able to give the answer. All of you जो भी देख रहे हो सबको आंसर देना है भाई. Everyone must answer. All right, the time is up, and now you can still keep on answering. All right, now I'll give you the correct answer over here. So statement A says Amri Ansari was against humanity since childhood. Well, we didn't find anything as that like that. Statement B says the security agencies believe there is a change in trend as far as terrorist attacks are concerned. Yes, there is a change in trend. And statement C says the law enforcement agencies must take suitable actions quickly to stop terrorists in Europe. Well, it's also true, by the way. So the correct answer over here is going to be option 1, and that says only A. Yes, so it's going to be only A. Amri Ansari was against humanity in childhood. This is not true according to the given passage. So now, once again, it's time to increase your vocabulary. It's time to defeat all of that fear that you guys have regarding vocabulary words. So now it's the time for the ultimate, the brilliant, the Hindu vocab quiz. So let's have a look at the first image. So, well, here's an image of a very renowned personality, by the way. I'm sure you know her name. That's Dolly Bindra, by the way. और डॉली बिंद्रा जी के संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है she is known for her petulance. All right. तो इनको लोग जानते हैं इनके petulance के लिए. अब देखो जो petulance है,
आप कह सकते हैं बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट ही दूंगा, ऑलराइट. सो दैट्स बीइंग हॉट हेडेडनेस, ऑलराइट. या फिर कह सकते हैं आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना या फिर बहुत ओवर रिएक्ट कर देना, ऑलराइट. तो समथिंग लाइक दैट इज द मीनिंग ऑफ पेट्यूलेंस. आई एम प्रीटी श्योर कि आपको यहाँ हिंट समझ में आ रहा होगा. तो इनको लोग जानते हैं इनके पेट्यूलेंस के लिए, ऑलराइट, इनके जल्दी गुस्से में आने के लिए और बहुत जल्दी जो है रिएक्शन देने के लिए, ऑलराइट. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द question. Well, here's a question for you, my dear aspirants. Which of the following are the most similar in meaning to the word petulance? तो इन options में से कौन सा है सबसे नजदीकी petulance के? आपके पास options हैं peevishness, pettishness, calmness और coolness, and you got approximately 30 seconds to give me an answer. Your time starts now. So what's the answer? 30 seconds or 15 seconds left for you. Answer quickly. Brajesh says 1. Sakshi says 2. Hurry up, everyone. Last 5. Okay, the time is up and now it's my turn to give you the answer. Well, when we talk about the synonyms of petulance, that's going to be peevishness and pettishness. So that means option B and A, that says option 2. That means B and E, excuse me. Alright, so the correct answer is going to be here B and A. Alright, so that's the correct answer. जिन्होंने भी कहा है option number 2 ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. It's going to be option B and A. Calmness and coolness are the antonyms for petulance. Now let's have a look at the next slide. See, here's the next slide for you, and by the way, all of you know this guy most probably. He has a habit of reneging on his promises to our nation. Alright, that's Nawaz Sharif for you, my dear ladies and gentlemen. और आप जानते ही हैं इनका जो है इनकी एक हैबिट है, इनकी एक आदत है, alright. ये अपने वादों से मुकर जाते हैं, alright. Whatever he says, he often turns back, alright, and he often goes back on his words, on his promises to our nation regarding a lot of acts, alright. So now it's time for the question. I'm sure you would have got the hint over here. The question is, which of the following are the most opposite in meaning to the word reneging? All right. So जो ये reneging है भाई, इसका एंटोनिम क्या होगा इन ऑप्शंस में से? आपके ऑप्शंस है A honor, B maintain, C repudiate, D retract. You got approximately 30 seconds to give me an answer, and your time starts now. Last 15 seconds, hurry up. Well, the time is up, and now it's my turn to give you the correct answer. You can keep on answering, by the way. Well, option A says honor. All right, the reneging synonym, option A says, okay, not the synonym over here. The first option given over here is honor or maintain. That will be the opposite of reneging. All right. See, reneging का मतलब होता है बात पे पलट जाना. All right. Okay. तो उस पे उसका honor न करना, उसका सम्मान न करना. और एंटोनिम देखे तो honor और maintain हो सकते हैं reneging के. तो जो ऑप्शंस हैं A and B या फिर B and A दिया हुआ ऑप्शन नंबर 5 में बिल्कुल सही जवाब है. तो जिन्होंने भी कहा है कि ऑप्शन नंबर 5 इज द आंसर, वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स. इट इज B and A, ऑप्शन नंबर 5. और जो सिनोनिम होने वाले रेंजिंग के वो होंगे रिप्यूडिएट या फिर रिट्रैक्ट. नाउ लेट्स हैव लुक एट द नेक्स्ट इमेज. वेल डन एवरीवन, गुड गोइंग. अब देखो जो अगला वर्ड है यहाँ पर वो हमें मिलेगा इंग्रेस के फॉर्म में. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें भाई, सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू गेट एन इंग्रेस एट दिस यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट. तो इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा जाना भाई किसी भी सपने सच होने से कम नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए. ऑलराइट, सो एक्चुअली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू गेट एन इंग्रेस, टू गेट एन एडमिशन एट दिस यूनिवर्सिटी एज अ स्टूडेंट. सो नाउ लेट्स हैव लुक एट द क्वेश्चन. ओके, देखो ये रहा सवाल आपके लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इनग्रेस. तो आपको एंटोनिम बताना मुझको यहाँ पर इनग्रेस के रिगार्डिंग. ऑप्शंस है एंट्रेंस, एग्रेस, एडमिटेंस, एग्जिट. ऑलराइट, टाइम है 30 सेकंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Last 15 seconds, my dear aspirants, hurry up.
Well, your time is up, by the way, and a lot of people are giving you answers. You can keep on giving me answers, no issues. Well, the thing is, statement, now the option A says entrance and option B says egress. Well, these are actually two different options, alright. Entrance or admittance has the same meaning as ingress, and the antonyms would be egress or exit. That means B and D. That's going to be option number 2 that says B and D. जो सही जवाब होगा देखो यहाँ पर वो होगा B and D. Ingress का मतलब होता है प्रवेश, और जो synonyms है इसके वो होगा entrance या फिर admittance, यानी कि जो इसके एंटोनिम होंगे वो होंगे egress या फिर exit. तो आप में से जिन्होंने कहा है विकल्प नंबर 2 ने बिल्कुल सही कहा है, शाबाश. तो B and D सही जो है ये होंगे इसके एंटोनिम्स ingress के. Now it's time for having a look at the next image. Well, here's a terrorist for you, my dear aspirants. He will be punished for his dastardly acts against our nation. So that's Azhar Masood, by the way, and he will definitely be punished. इनको जरूर सजा मिलेगी. इनके जो dastardly attacks हुए हैं, जो alright, जो कह सकते हैं आप बेरहमी वाले जो attacks हुए हैं, जो acts उन्होंने किए हैं हमारे nation के खिलाफ, उसके लिए इनको सजा जरूर मिलेगी. अब हम लोग देखते हैं हमारे question पे. Well, here's the question for you, my dear aspirants. Which of the following are the most similar in meaning to the word dastardly? So, जो synonyms है वो क्या है dastardly के संदर्भ में? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर. ये है wicked, cruel, just or pleasant. Your options are wicked, cruel, just or pleasant. You got approximately 30 seconds and your time starts now. Last 15 seconds, hurry up. Well, the time is up for you, my dear aspirants, and now it's my time. It's my turn. You can still keep on answering. It's my turn to give you the answer. Wicked and cruel. That will be the correct synonym for the word dastardly. All right, and that's why it's going to be the answer is going to be option number 1 that says A and B. तो जो dastardly देखिए ये जो है इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्रूर. All right. तो जो सही यहाँ पर जवाब होने वाला वो होगा विकेड या फिर क्रूल, और इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो होंगे जस्ट या फिर प्लेजेंट. तो जिन्होंने भी कहा कि विकल्प नंबर 1 सही जवाब है, शाबाश. अब देखते हैं फाइनली हमारे इस क्विज के आखिरी सवाल की ओर, और उम्मीद करता हूं कि आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं इस क्विज पे. सो लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन प्लीज. Now, here's the last image for you, by the way. He was the lead actor in the film that displayed travesty towards the film 300. तो ये जो भाई आपको यहाँ दिख रहे हैं, वैसे ये हीरो थे उस एक फिल्म में जिसका नाम था Meet the Spartans, और जो एक पैरोडी थी 300 की. All right. So the thing is, now let's have a look over here at the question, please. So which of the following are most opposite in meaning to the word travesty? इन options में से कौन सा यहाँ पर होने वाला है antonym travesty का? जो options है वो है mimicry, mockery, flattery या फिर praise. So these are the options. आपके पास 30 सेकेंड है और समय शुरू होता है अब. Okay, last 15 seconds, by the way. Hurry up. And the time is up. You guys can keep on answering. Everyone should answer. Well, the correct synonym for the word travesty would be mimicry or mockery, and the antonyms are going to be flattery or praise. That means the options C and D. All right, that'll be the correct answer. That's in option number 3, by the way. तो जिन्होंने भी कहा है कि विकल्प नंबर 3 सही जवाब होगा, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है. Yes, it's going to be C and D. So, my dear aspirants, it's time to show me your scorecard. So, what's your scorecard? Come on, give me quickly. उम्मीद करता हूँ कि आज आपने जो रीअरेंजमेंट प्रैक्टिस किया, जो कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस किया और जो एडिटोरियल समझा, साथ ही में जो वोकैबुलरी प्रैक्टिस किया, इससे आपको बहुत 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 फायदा हुआ होगा. आई होप दैट द प्रैक्टिस ऑफ रीअरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, द वोकैबुलरी बेस्ड क्विज एंड आल्सो द एडिटोरियल्स, ऑलराइट, they would have helped you a lot, and definitely you're going to have a look at the benefits that you'll find in the next few examinations. So this is awesome. Thank you, Mr. Bhutia. All right, so I hope you guys are enjoying. Now give me your scorecard. All right, hurry up. So 3 on 5. Okay, that's very good. Now give me some more scorecards, by the way.
Okay, 515 says Abhay Dopte, 515 says Mansa. Well, if these are honest, then it's really good score, by the way. Once again, another 515 by Tanima, 515 by Deepti, 315 by Ratnil, okay, 415 by Asmita, alright, 515 by Kamalam, that's very good. Prasanjit says 515, and 818 by Vidushi Agarwal. If that's true, that's great. 10 on 10. How can it be 10 on 10? Aditi Sinha, I didn't give you 10 questions, by the way. So 7 on 8 by says Sheesh Khanelwal and Vikramjeet. Now the thing is, okay, English Adda के regarding कुछ questions आ रहे हैं. वैसे मैंने आज आपको एक वीडियो दिया हुआ है English Adda पे, तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देखिएगा. आई एम श्योर कि आपको मजा आएगा और आपको आसानी दिखेगी इंग्लिश को समझने में. So well done, my dear aspirants, all those of you who have worked hard and who actually took part in this particular session. So well done. I'm pretty sure, all right, and we are open to your feedback. तो अपना feedback हमको जरूर दीजिए कि आपको कैसा लगा आज का The Hindu Editorial and Vocab show, और हम इसमें और क्या include कर सकते हैं जिससे कि आपको मजा आएगी. So that was all in our today's session. Thank you and good night.